The movement and locomotion. As we know that all locomotions are movement. But all movements are not locomotion. So, but not vice versa. So all locomotions are movement. Locomotion means change of the position. When somebody is changing the position, means the body is moving. Because of the movement, the locomotion has been occurred. But all movement does not lead to locomotion. So what are the locomotory organs? Locomotory organelles present in case of human being अगर बोला जाए, we have amoeboid movement. हाँ, देखो सोचो. WBC का amoeboid movement. यही तो क्वेश्चन है. आप लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत भयंकर होता है. नो, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है. पूछेगा which of the following movement or organelles are associated with the human being? amoeboid movement है WBC. ciliary movement, ciliated epithelium है. Ciliated epithelium in the fallopian tube present in the what not different part as central canal of spinal cord, brain, ventricle present है. Flagellar movement. And muscular movement. अगर आपको पूछता है कि which of the following locomotory organs present in the female human being, तो वहां पे फ्लैजेलर को आप स्किप करेंगे, बाकी तीनों हो जाएंगे. अगर मेल पूछा है तो चारों होगा. समझ में आएगी नहीं? Easy questions. So we are coming to the next characteristics of muscles. Characteristics of muscles. You know, muscles के बहुत सारे characteristics है. One by one we will discuss. Number one, excitability. Excitability. Response of a muscle to stimuli is called as excitability. And ये जो stimulus है, chemical stimuli हो सकता है, electrical stimuli हो सकता है, mechanical stimuli हो सकता है, hormonal stimuli हो सकता है. ठीक है? So mechanical, electrical, chemical, hormonal, or maybe nervous. Stimuli may be of different type. Number two, conductivity. Conductivity,
spread of stimuli to other part. स्प्रेड प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी. आप क्योंकि जानते हैं कि एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी is actually two characteristics which is also applicable to the nervous tissue. याद है? The neurons are nerve cells also having the two same characteristics. और भी दो तीन कॉमन आएगा. Mainly ये दोनों चीज muscles and neuron both having the common character. Number 3. Elasticity or tensility. Elasticity means what? Process of contraction and relaxation both. Yes or no? Contraction leads to shortening or lengthening. And relaxation leads to lengthening. So contraction and relaxation leads to the elasticity. So elasticity is the word which is associated with the property of contraction and relaxation. Leads to shortening and lengthening. So muscles have this property. लेकिन क्या न्यूरॉन का ये प्रॉपर्टी है? नहीं है. नेक्स्ट नंबर 4. Single muscle twitch. One stimulus leads to one contraction and one relaxation. Means muscle will once contract and once relaxed in response to one stimulus. Muscle will always, respond to the stimulus with one contraction and one relaxation. Then muscle will again contract and relax with respect to the second stimulus. जितने बार stimulus आएगा, उतने बार उसका twitch होगा. So what is the meaning of twitch? One contraction and one relaxation is called as one or single muscle twitch. And single muscle twitch means related to single stimulus only. Take now number 5. Threshold or liminal stimulus. Threshold or liminal stimulus. Minimum intensity or minimum strength minimum intensity or minimum strength of stimuli need to excite the muscle is called as what? A threshold or liminal stimulus. So muscle will respond. यहाँ पे आप excite और respond लिख दीजिए, better होगा. So minimum strength of stimuli which need to respond to its muscles is called as what? The threshold or liminal stimulus. And अगर supraliminal हुआ, मतलब more amount or less amount.
Subliminal, less or more? Yes. Supraliminal अगर stimulus reach करता है, the muscle will respond or not respond? Will respond. अगर मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस से कम हो गया तो, सबलिमिनल स्टिमुलस हो गया तो नॉट रिस्पॉन्ड. सो ये जो मसल जो रिस्पॉन्ड करता है मिनिमम से ज्यादा हो गया, दैट इज सुप्रालिमिनल सपोज टू बी. तो मिनिमम से ज्यादा होने के बाद मसल क्या ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा या नॉर्मल रिस्पॉन्ड करेगा? ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्मल. मसल हो या न्यूरॉन हो, कभी भी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते. Response is always normal, right? Stimulus minimum होना चाहिए. जैसे ही मिनिमम रिच कर गया, मसल और न्यूरॉन विल रिस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुलस. अगर उससे कम हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. ज्यादा हुआ तो भी नॉर्मली ही रिस्पॉन्ड करेगा. एक एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है, टर्नओवर, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन कम हो या सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो हमेशा एक स्टैंडर्ड वे में ही चलता है. अगर आप सोचेंगे कि बहुत सारा सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बहुत फास्टर हो जाएगा? नो, नॉर्मल ही चलेगा. सेम टू सेम दैट. तो सुप्रालिमिनल स्टिमुलस एंड नॉर्मल लिमिनल स्टिमुलस, ये दोनों ही केसेस में मसल रिस्पॉन्स विल बी नॉर्मल. लेकिन जैसे ही कम हो गया, क्या ये रिस्पॉन्ड किया? नो. मींस आइदर मसल विल रिस्पॉन्ड और मसल विल नॉट रिस्पॉन्ड. देयर इज नो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स, देयर विल नो मिनिमम रिस्पॉन्स और लेस रिस्पॉन्स. इस प्रोसेस को, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं ऑल नॉन प्रिंसिपल. क्या बोलते हैं उसको? ऑल नॉन प्रिंसिपल. ऑल मीन्स होगा, नॉन मीन्स नहीं होगा. या तो होगा या तो नहीं होगा. ऑल नॉन. नंबर 6. Response of muscle is not increase with respect to increase in stimulus. The response of muscle is not increased with respect to increase in stimulus. तो मैंने आपको ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे कि सुप्रालिमिनल में भी नॉर्मल होगा, नॉर्मल लिमिनल में भी नॉर्मल होगा, बट सबलिमिनल में रिस्पॉन्स नहीं करेगा. याद रहेगा. नंबर 7, refractory period. Non-responsiveness of muscle in between non-responsiveness of muscles in between two stimulus. So it is the time period when
The muscle not respond to stimulus. That is the time period when the muscle will not respond to the stimulus, means it is the time period when the muscle is relaxing. तो हम ये बोल सकते हैं कि refractory period is actually the period of relaxation in between two muscle twitch. है कि नहीं? एक muscle twitch आया तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक बार रिलैक्स हो गया. अब अगर इमीडिएटली सेकेंड मसल ट्विच आएगा तो मसल उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. मींस द मसल इज कंप्लीटली रिलैक्सिंग, देन ओनली दे विल रिस्पॉन्ड टू द सेकंड स्टिमुलस. जब तक वो कंप्लीटली रिलैक्स नहीं होगा तब तक वो सेकंड स्टिमुलस को रिसीव नहीं करेगा. इससे फायदा क्या है? इससे फायदा है कि लैक्टिक एसिड डिपॉजिट नहीं होगा. तो अभी बोलिए रिफ्रैक्टिव पीरियड इज हाईएस्ट इन व्हिच मसल? Cardiac muscle. And that is why the cardiac muscle non-stop muscles. समझे? So it is highest in cardiac muscle and minimum in skeletal muscle. क्योंकि skeletal muscle आप जानते हैं बहुत ही फास्ट काम करता है and immediately respond करता है, नहीं? And that is why the lactic acid deposited more, and that is why that skeletal muscle is fatigue muscles due to deposition of lactic acid. Next we are coming to summation. Number 8, summation. Two or more subliminal stimulus will applied on muscle simultaneously. बोलिए what will happen? अगर एक दो और दो से ज्यादा, if the subliminal stimulus, I have told you the strength of stimulus will be minimum से भी कम होगा. Subliminal, right? So 2 or more subliminal stimulus will be applied to a muscles at a time or simultaneously. अगर हम दोनों को ऐड कर दिए, जितने भी subliminal stimulus है, तीनों को, चारों को, जितने भी हो गए सबको ऐड कर देंगे. समेशन, एडिशन करने के बाद वो हो सकता है कि वो लिमिनल स्टिमुलस और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को रीच कर जाए. रीच करने से मसल तो रिस्पॉन्ड करेगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? समेशन इफेक्ट. सो 2 or more subliminal stimulus will applied on muscle simultaneously will added and reach threshold stimulus and muscle will respond. Then this is called as summation effect. Muscle का summation effect present है. Next we are moving to tetanus. जल्दी बस देते. गुड बाय. I love sons.
but not inside the class. Complete है क्या? आज उधर गया नहीं नहीं गया 10 मिनट है अभी कंप्लीट है क्या नंबर 9 tetanus sustained or continuous contraction of muscle due to continuous twitch to a muscle fiber. Remember, in a muscle, all muscle fiber. हम लोग पढ़े कि muscles is a bundle of muscle fiber. The muscle fiber, remember, supposed to be this is a muscle fiber. ये एक muscle fiber है. And you remember, every muscle fiber is innervated by a nerve fiber. Supposed to be this is a nerve fiber. This is a muscle fiber. तो सोचिए कि every muscle में एक muscle में बहुत सारा muscle fiber है. And every muscle fiber is innervated by one nerve fiber. मतलब जितना मसल फाइबर होगा मसल्स में उतना नर्व फाइबर भी मसल को सप्लाई होता है एंड दिस टुगेदर टू फॉर्म वन मोटर यूनिट one motor unit is formed of what now one more nerve fiber and one muscle fiber. तो ये कौन सा नर्व फाइबर है मोटर नर्व फाइबर है कि नहीं this is motor nerve fiber with muscle fiber which it is innervated then that togetherly called as what one motor unit तो आप बात को समझिए एक मसल सपोज आई एम होल्डिंग ए पेन हम पेन को ऐसे होल्ड किए बहुत लंबे टाइम के 2-4 घंटा 5 घंटा जितने मन के लिए तब तक दर्द पकड़ सकते हैं आई एम एबल टू होल्ड द पेन मींस आई एम माय मसल इज ऑलवेज इन द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज that is why able to hold the pain otherwise the muscles will relax then the pain will be that is what now that is unhold तो इसीलिए जरूरी है जानना कि यहाँ पे मसल्स को हम कंट्रैक्टेड स्टेज में रखे हुए हैं इसीलिए हम होल्ड करके रखे हुए हैं बट मसल्स इतने टाइम के लिए तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहेगा नहीं वो तो रिलैक्स होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा तो एक मसल्स में in a muscle all muscle fiber does not contract at a time all muscle fiber of a muscle does not contract कुछ मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है तो कुछ मसल फाइबर रिलैक्स स्टेज में भी है अल्टर हो जाएगा जो फाइबर रिलैक्स कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो कंस्ट्रेंट किया वो रिलैक्स करेगा तो अल्टीमेटली मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहेगा कि नहीं दैट इज व्हाई एबल टू होल्ड द पेन और बुक एनीथिंग एटसेट्रा सो इन अ मसल ऑल मसल फाइबर do not contract at a time but in rotation so able to hold a pen or book
देखिए जैसे पैटेंट वर्ड है, मैंने बताया था ना, बीजिंग दे दिया तो आंसर क्या होगा, आस्थमा। सस्टेन दे दिया तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिससे खाली समझ में आ जाता है कि आंसर क्या होगा। सस्टेन दे दिया मतलब टिटेनस, एंड हम लोग टिटेनस के बारे में बाद में भी पढ़ेंगे। कंप्लीट है। लास्ट हम कर देते हैं आज के लिए 10। मसल टेंशन। मसल टेंशन, टेंशन मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स हो गया। मसल टेंशन और मसल का जो फोर्स है वो दो टाइप का है। नंबर वन इज आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, मतलब फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू डू ए वर्क। तो फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू डू ए वर्क। अगर सफिशिएंट नहीं है क्या होगा, मसल विल शॉर्टन और मसल विल नॉट शॉर्टन। मसल अगर शॉर्टन नहीं होता है तो वर्क विल नॉट डन। समझे कि नहीं, as the force is not sufficient to do that particular work, that means the force which is not sufficient enough to contract that muscle. The force is not sufficient to do work, that means so no contraction of muscle. कोई भी हेवी चीज आपसे नहीं उठ रहा है, 150-200 किलो का सामान है, आपको बोला गया उठाने के लिए, या आपको बोला गया कि इस वॉल को धक्का मार के गिरा दीजिए, क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए कि धक्का मार रहे वहां पे हम खाली मूव हो रहे हैं लेकिन वॉल तो हिल नहीं रहा है, वर्क डन और नॉट डन, मसल बिकॉज कंट्रैक्ट नहीं हो रहा है। सेकेंड इज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स इज sufficient to do a work. So muscle is contracting and the work will done. एग्जाम्पल जैसे कि लिफ्टिंग है, कुछ भी ले लीजिए, सपोज टू लिफ्टिंग है बैग, दो तीन और बचा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स के अंदर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वही डिस्कशन किए। सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।